Hello everyone, welcome to Health Global. Joining us today, Mr. Amit Tandon, a well-known Indian television actor and singer, best recognized for his impactful roles in shows like Kaisa Ye Pyar Hai and Dil Mil Gaye. Starting out as a finalist in Indian Idol, Amit successfully transitioned into acting, earning praises for both. With a career spanning over a decade, his versatility and charisma have made him a familiar face in Indian household. Let's deep dive into his journey. I am Samik and you're watching Mindspeak. Let me begin by asking you, what inspired you into singing? जो मेरी शुरुआत थी फ्रैंकली अमेरिका में मैंने ऐसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कभी ली नहीं थी एंड जब मैं इंडिया आना चाह रहा था व्हेन दीज रियलिटी शोज वर हैपनिंग मुझे कहीं ना कहीं लगा बिकॉज कॉलेज में स्टेज शोज पे इधर उधर एक आधा गाना गा लिया बट जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जो जरूरत थी दैट नेवर रियली हैपेंड बट आई फील लाइक एक कॉन्फिडेंस थी और मुझे लगता था कि मैं हल्का फुल्का गा सकता हूँ एंड जब फाइनली मैं उस स्टेज पे आया जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया देन मुझे समझ में आया कि अपने घर में गाना अपने दोस्तों के साथ गाना एक स्कूल फंक्शन में गाना वो बात अलग है लेकिन पूरी दुनिया के सामने और वो भी जजेस के सामने जब आप गाते हो तो उसके लिए आपको फॉर्मल ट्रेनिंग की सख्त जरूरत होती है इवन लिटिल थिंग्स लाइक जस्ट प्रोजेक्शन वॉइस कल्चर उसको डेवलप करना माइक को कैसे पकड़ना होता है इवन थिंग्स लाइक दैट आई ऑनेस्टली हैड नो आइडिया कहाँ पे आपको माइक आपने देखा होगा कभी कभी जब लोग प्रोफेशनल सिंगर्स गाते हैं वो माइक दूर कर देते हैं कभी पास कर देते हैं आई थिंक मैंने पूरे परफॉर्मेंस को लिटरली माइक को ऑलमोस्ट एकदम मुंह के पास रखा तो जब भी ब या फा आता था तो एकदम ब्लो आता था एंड लिटरली ड्यूरिंग द परफॉर्मेंसेस मुझे बताते थे कि अमित तुम ऐसा लग रहा है कि तुम माइक को खा रहे हो थोड़ा दूर रखो सो you end up learning on the job but I think that was my entry and वो होने के बाद I feel like the funny thing is जब मैंने acting शुरू की then I became a lot more serious with music which is ironic because मैं इतना busy हो गया था acting के साथ but उस वक्त मुझे लगा कि नहीं मैं अभी इसको छोड़ूंगा नहीं और मैं तब तक अपने आप को प्रिपेयर करूंगा इनफैक्ट I'm flying out tomorrow for two back-to-back shows in Delhi and in Kashipur. So I feel like वो wake up call था मेरे लिए to hone the skills that I have and I think that is where the passion came and now it's a part of my life. जैसे मैं workout करता हूँ मैं वैसे ही मेरा रियाज बहुत जरूरी है मेरे लिए. You just said singing to acting. How did that happen? So मेरे लिए अजीब था because मैं hosting to singing to acting to singing it's always been that trio. Initially जब मैंने शुरुआत की तो एज अ सिंगर but then वो भी एक रियलिटी शो था इनफैक्ट इंडियन आइडल से पहले ही एक रियलिटी शो में मैंने हिस्सा लिया था which was for a channel called Channel V Pop Stars and इत्तेफाक से that show the people who didn't make it although we made it to the finals it was me Ayushmann Khurrana Surveen Chawla and Manjari Fadnis. We were the four people who didn't make it. And that is when the channel signed me on. Yeah, the irony of it. And then the channel signed me on as a VJ. And I did that for about a year. And then the Indian Idol journey began after about a year. And post that, then again, it was another jump because Gate Gate, they were like, आप एक्टिंग करो आपको एक्टिंग भी करना चाहिए तो देन आई स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग एज वेल एट द सेम टाइम आई वाज डूइंग स्टेज शोज एज वेल बट उसकी संख्या कम हो गई थी बिकॉज आई वाज जस्ट लिटरली शूटिंग 20-25 डेज अ मंथ और बाकी किसी व्हेन यू आर डूइंग डेली सोप्स के साथ आपको किसी और चीज के लिए वक्त बहुत कम मिलता है तो देन आई जस्ट गॉट कॉट अप बैक टू बैक डूइंग टीवी शोज एंड उसी में मैं ज्यादातर अपना वक्त बिताता था बट साइड बाय साइड मेरी ट्रेनिंग लगातार हो रही थी and that's how the journey pretty much began jumping back and forth but I feel like that's going to continue I enjoy doing both equally जो feeling आपको on stage लोगों के सामने live गाने में आपको मिलती है it's incomparable frankly बताऊं it's incomparable to anything that rock star वाली जो feeling होती है and at the same time getting a really strong character जिसको आपको निभाना होता है and make people either love you or hate you I think that is also an equally a challenge that I enjoy doing. So for me, it's both. Okay, you have been and you have seen it all. So how did music reality TV show evolved over the years, according to you? How has it evolved or devolved? I think it's probably both. Although I will say the talent is unbelievable. I am amazed by the level of talent that's out there. लेकिन
उसके साथ साथ I've also come to hear that a lot of times pre-recorded आपके tracks हो जाते हैं. मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. Pre-recorded तो मैं बहुत बढ़िया उस वक्त भी कर सकता था. Now तो I can do live and that, but you know, that was something that was definitely surprising. I feel now जो talent के साथ साथ, because it's now TRP based, you know, उस वक्त जब हमने किया था, there were very less amounts of these shows. I think एक मुश्किल से एक सारेगामापा, Indian Idol, that was just True. about it. Now every other channel is doing something or the other. But छोटे बच्चों के लिए भी है, season 1, season 2, and it's always like, you know, there's just too much of it. And although talent बहुत ज्यादा है, I feel like कहीं ना कहीं वो talent छुप जाता है. So whereas हमारे season में, I would say हमारे top 10 में से maybe 7 out of 10 of the people are still doing relatively very well, despite it being कितने साल पहले की बात. True. Be it Rahul, be it Abhijit, they're all doing relatively well. Harish Moyal, I have to remember mention all the others. किसी को बुरा नहीं लगे, विशाल कोठारी, बाकी जो भी है, Amit Tandon included, I guess. But अब वैसा नहीं होता. अब आपको मुश्किल से 2-3 जो टॉप आते हैं, वो उनको एक पुश मिलता है चैनल की तरफ से, and then they get their shows. That way I feel like the reality aspect has gone, you know, because that time it was live, what you're doing exactly वही आएगा. अब क्या होता है that I feel like स्टोरी लाइंस बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होती हैं, you know. हमारे वक्त में भी थोड़ा बहुत वो शुरू किया था, but it was at the very nascent stage. It was not really something that was like every single person had it, you know. थोड़ा बहुत दिखाया, but I don't feel like that was really influential on the audience as such. I mean, really, it all depended on your performance. But now I feel like everybody has a story, everybody has something, and that drama factor. But maybe that is also part of the, because उनको TRPs चाहिए, right? They need to have ratings for the show to do well. तो वो करने के लिए वो थोड़ा बहुत very much on the face now. Yeah, but वो मसाले ऐड करने की जरूरत है, which maybe takes away from the actual aspect of the talent show. But I guess, you know, people are relatively enjoying it, I think, at some level, so it's okay. अच्छा, प्लीज बताइए कैसा है प्यार, ये आपके करियर को कैसे शेप किया? वो एक obviously मेरी एक्टिंग की शुरुआत थी. बालाजी के साथ भी मेरा सबसे पहला शो था, one of many that I've done with them. तो इंडियन आइडल जब खत्म हुआ, मेरी जब जर्नी खत्म हुई, तो जो चैनल के हेड थे उस वक्त मेरे पास स्टेज पे आए, बिकॉज मैं थोड़ा डिसहार्टेन तो हो गया था, बिकॉज आई वाज लाइक, यार मतलब टॉप 10 में तो ठीक था, लेकिन मुझे तो लगा मैं थोड़ा आगे जाऊंगा. हालांकि रियलिस्टिकली उस वक्त मुझे एक अंदर से जो मेरी आवाज थी कि अमित, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड येट टू बी एबल टू गो मच फर्दर. मे बी आप एक आधा राउंड एक्स्ट्रा चले जाते, बट आई न्यू दैट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज एट दैट पॉइंट. तो उस चीज की वजह से कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस भी अंदर अंदर थी, बट ऑब्वियसली मेरे चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट वो दिख जाती है. जो मैं सोचता हूँ वो मेरे चेहरे पे दिख जाता है pretty much right away. तो जब आई थिंक चैनल वालों ने वो देखा मेरे पास स्टेज पे, से डोंट वरी, हम तुझे एक बहुत बढ़िया, इनफैक्ट उस वक्त उन्होंने बोला था कि आप एक रॉक स्टार बनोगे हमारे नेक्स्ट शो में. एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड, लाइक, ओ रॉक स्टार, मतलब मैं शो में गाऊंगा. एंड इनफैक्ट आई डिड सिंग फॉर द शो, बट देन व्हेन आई मेट एकता, शी इज लाइक, you know, although I know you really want to play the rock star, but I feel like you would do really good in this other role. And I was disappointed. मैं क्यों झूठ बोलूं? It went to one of my best friends in the industry, Iqbal Khan. But at that time, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, I was like, you feel that ये तो ना इंसाफी है. मतलब गाता मैं हूँ, स्टेज पे परफॉर्म मैं करता हूँ, और रोल इसको मिल गया. But I think whatever happens for a good reason. And it was a very good learning experience for me at the same time. Helped me grow as an actor, because उस वक्त मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर थी. शुरू में मुझे काफी लोग कह रहे थे कि अमित, आपको हिंदी को ब्रश अप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी आवाज को डब करनी पड़ेगी. एंड लकीली आई फील लाइक दैट किक दैट आई गॉट वाज वेरी गुड, बिकॉज इट मेड मी वर्क दैट मच हार्डर. एंड उतनी ज्यादा मेहनत मैंने की अपनी डिक्शन को सही करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग एन एनआरआई की खासियत ये है कि हम इंग्लिश बढ़िया बोल लेते हैं, लेकिन हमारी हिंदी पर, हाँ आप कैसे हो, आप कैसी जा रहे हो, एंड ऑल, वो वैसा होता है. तो ऑब्वियसली हिंदी शोज के लिए तो वो काम नहीं करेगा, राइट? तो मैंने ब्रश अप किया, एंड आई थिंक 3 गुना मेहनत जो मेरे शायद को एक्टर्स कर रहे थे अपने अपने स्क्रिप्ट में, मैं उससे ज्यादा ही कर रहा था, ताकि मैं अपनी डिक्शन को सही करूं. एंड then the journey went well, and the role was appreciated, which is something obviously every actor wants.
and uske baad to there was no looking back. I think back to back I was just doing shows after that. How do you prepare for these roles? Matlab, is there any process that you follow? I know a lot of people say this, that I've heard actors saying for films and all कि इतनी ज़्यादा preparation करनी पड़ी थी and उनको एक महीना अलग से रहना पड़ता था. I don't believe that's the case. It's a turn on, turn off switch. और मैंने जब भी कोई रोल्स किए, मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं अपने आप को उस रोल में अगर मैं वैसा होता तो मैं क्या करता. बिकॉज आपकी नेचुरल टेंडेंसीज आपके एक्शन और एक्टिंग में आनी चाहिए, अदरवाइज वो कभी कभी बनावटी लगते हैं. तो मैं whether he was a lover boy or he was a very gray shaded or even a negative character, मैं उस situation को समझ के, उसके back story को समझ के, I would create the role according to me. And I think that's the way I always followed, everything that I've done acting wise. Okay, how was the experience playing the role of Dr. Abhimanyu Modi? Loved it. I loved it. But that was, I would genuinely say that was one of the best shows I've done. I genuinely enjoyed the show. उसमें कभी कभी डांस भी करते थे, मतलब ऑब्वियसली एक दो बार गाने भी गाए, एक्शन भी था, रोमांस भी था, मतलब इट वाज लाइक अ खिचड़ी ऑफ एवरीथिंग. सबसे कम जो हम करते थे वो डॉक्टरी और वहां पे करते थे. बट आई फील लाइक, एंड बीइंग दैट वाज supposed to be a twist or a kind of a spin-off of Grey's Anatomy, which was also one of my favorite shows. But Grey's Anatomy फिर भी उसमें एक सर्जिकल एस्पेक्ट काफी था उसमें. हमारे में सर्जरी करते करते मतलब किसी से रोमांस हो रहा है, किसी से झगड़ा हो रहा है, things like that. But definitely a lot of fun. I loved working with all of the people that were on the show. And I think audience को आज तक भी, I would say there's a few of my roles that people really held on to, and that's definitely one of them. True. What do you see in a script before you say yes to it? I always see that there should be masala. I generally don't like playing goody two shoes because TV में वो बहुत boring होते हैं मेरे हिसाब से. It's literally just हाँ जी, ना जी, okay माँ जी, अच्छा मैं जाता हूँ, मैं वापस काम पे आता हूँ, and I get bored real quick. So for me, the role has to have spice. It has to have something, in depth, either in the character. So definitely roles जहाँ पे character positive हो, लेकिन उसके अंदर gray shades हो. जो I think हम as in human beings, हम सब में ये tendencies हैं. Nobody is black and white. Everybody is, there's many shades to us as a human being. तो वैसे roles करने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. So जहाँ पे मुझे ये दिखता है कि इसमें aspects अलग हैं, even if it's something that's out and out negative, then I also don't like it because it's just, that also becomes repetitive. लेकिन आप अच्छा होके कोई गलत चीज करो या situation आपको गलत बनाए, that is still something that to me, has a lot of a depth to it, and there's a lot you can play with. Even my character of Abhimanyu, he was somebody that was loving, but he had a very strong and very angry exterior, like no nonsense type of exterior. And वो चीज ब्रेक होती थी, फिर वो वापस वो वॉल खड़ी कर देता था, and वापस वो रोमांस में ब्रेक होता था, फिर वापस he would. So that dilemma was always nice to have, and most of my roles I think have been like that. Okay, so is there any role or any genre which is there in your mind which you plan to do it in future? देखो, I've been lucky to be able to do everything, to be honest. I've played the romantic roles, I've played the negative gray shaded roles, I've done comedy. I did 2 comedy shows with Sub TV as well. I've thoroughly enjoyed that. Actually, that's probably the one area that I would love to do more of. Sure. Because I think मेरी बीवी बच्चे तो यही बोलते हैं कि मैं जोकर हूँ, तो I'm assuming that is inside me. बचपन में मेरे पापा आज तक भी यही कहते हैं कि तू जोकर है. So so I'm assuming वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज है, and I love doing comedy roles for sure. One thing I've not played is an out and out action, like a cop, one of those types of roles. So that's definitely something I would like to explore because I feel like वो भी मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. Someone who's very stern but like all out action, being that I've been active with my physical fitness and boxing and things like that. So I feel like वो थोड़ा इस्तेमाल करने का अगर मुझे ज्यादा opportunities mile. I did that in my recent music video. We had a little bit of boxing included in that video, but definitely something along those lines, comedy and more straight up action. Both put together, the action comedy genre. Oh, I would love it. Something जैसे अक्षय कुमार करते हैं. Oh yeah, I would love it. I would love it. Oh, that would be fantastic. Yeah.
Obviously, Akshay Kumar has raised the bar. I think he's one of the most physically fit. Even at his age now, he's still so physically fit, and he's definitely True. inspiration more than I would say most others. Because although I do weights, but I believe that nowadays it's become all about quick fix body banai like that. And for me, I've had the physique ever since I came into the industry. I mean, I've been working out now. मुझे लगभग बाप रे कितने साल 30 साल हो गए हैं वर्कआउट करते करते. Oh, wow. And I मेरे लिए तो it's become a part of my life. That's why you'll never see me very drastically change. The moment you see somebody drastically change, you can understand कि ये चीज naturally नहीं हुई है. Because it just, to develop your physique takes time. It genuinely takes time. It's building up fibers and building up things. ठीक है, कभी आप weight put on करोगे, वो that's different. That's totally dependent on your diet. But generally, fitness for me is a lifestyle. So मेरे लिए it's something that I do. Like I said, जैसे रियाज करता हूँ, वैसे ही daily. I actually just got back from a really heavy duty class, so I'm literally burnt out. And now tomorrow I have to travel for singing shows. So आपके साथ interview के बाद I'll be probably getting back to some more riyaz. Okay. What is your core philosophy of fitness and wellness? My core philosophy for fitness and wellness is I look at our body like an engine. Okay. Sure. अगर आप अपनी body को एक गाड़ी की तरह treat करोगे, if you let the car just sit, वो it'll catch rust, वो जंग पकड़ेगी, और जब आप turn on engine को करोगे, वैसा करेगा. तो आपकी बॉडी भी वैसी है. आप जितनी अपनी बॉडी को चलाओगे, and same thing with the car, अगर आप बहुत ज्यादा चलाओगे, it can also burn out the engine. So you have to run it. You have to make sure it's running. Run it at a good speed so that the car, gets its use of energy. Because you have to burn that fuel जो हम अंदर डालते हैं खाने को लेके. I'm a big foodie. So मेरे लिए, being a Punjabi especially, I love my Punjabi food. I love all types of food. Actually, I can't even limit it only to Punjabi food. And I have a big sweet tooth, which I'm trying to control now. That's why you see me with these protein shakes. I added some blueberries in there. But it's that, you have to eat healthy. I also don't believe in ekdam strict jo ghas poos type of diets that people have. You have to enjoy your food as well. There are certain taste buds that we have to hit, and that we, wo thoda, matlab, eating should also be an enjoyable experience. It's not something that we should be like, I'm eating it because so I don't do that. But you have to eat things in limit, and you have to be active. So to me, the advice I would give is enjoy what you're eating, but eat within limit, and always look at, if you've eaten something that has extra calories, aapne ek din kuch extra meetha kha liya, make sure you're taking that out in the gym. So that extra effort in the gym should be there, and you have to be consistent. It cannot be मैंने हफ्ते में एक बार कर लिया. You have to do it as consistently as possible, and once you make it a part of your lifestyle ना, फिर वो चीज कभी जाती नहीं है. Like with me, I think मैं जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगा भी, it'll probably be after a workout or something, because I can see myself being that old grandfather in the gym saying, "Beta, ये देखो, अभी भी कर रहा हूँ." And but I'll be happy as long as I feel like, and that's an inspiration from my Dadaji, to be honest. क्योंकि वो till the age of 74, he and unfortunately ended up getting cancer. But till then, he was as strong as an ox. He was strong as an ox. I remember in his heyday, 19 inch ki gardan thi unki. Oh, And he used to have this very big tattoo on his arm. Maybe that's where I got the inspiration. मैंने थोड़ा extra कर दिया. But he used to have this tattoo of Sardari Lal Tandon. And he was just so intimidating, loved me to death, but very intimidating. And unki आवाज जब ऊंची होती थी, everybody in the house, from my parents to the, his sons to the grandkids, it was like, don't cross him because he will beat the hell out of you. you have spent quite some time in the industry. Please tell us about some of the challenges that you have faced. See, with the good comes the bad. And Sure. there are challenges, because यहाँ पे this line is such that it's never consistent, right? बहुत लोगों के लिए, I think every actor will tell you at some point or the other, they went through phases where काम नहीं मिल रहा था, या जो काम उनको करना था वो नहीं आ रहा था, True. और जो चीजें उनको नहीं करनी थी वो ही आ रही थी. So in my case, it's a little bit of both. Sometimes the things that I did not want to do would come my way, and I would just say no. And sometimes the thing that I really wanted to do, they just wouldn't work out, or for whatever reason.
एंड आई थिंक वो ही एक चैलेंज है कि मेंटली आपको एंड यहाँ पे यू हैव टू फेस रिजेक्शन एंड यू कैन फेस रिजेक्शन फॉर अ मिलियन रीजंस. इट डजंट हैव टू ओनली बी अबाउट योर परफॉर्मेंस. इट कैन बी, नहीं मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, या it could be anything. It could, I mean, literally, it's at the eyes of the beholder. Someone who's watching your audition, sitting there saying, नहीं मुझे तो इसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती, इसने मेरे से एक पार्टी में अच्छे से बात नहीं की, इसलिए मैं इसको, आई मीन, I've had that happen as well, कि अरे इसमें बहुत एटीट्यूड है. तो हालांकि मेरे में एटीट्यूड नहीं है, आप मुझसे हाय हेलो नहीं बोलोगे तो मैं शायद आउट ऑफ माय वे नहीं जाऊंगा आपसे ऐसा कुछ करने के लिए. तो दैट्स जस्ट द वे आई एम वायर्ड दैट वे, तो मैं थोड़ा सा अपने आप में ही रहता हूँ, a little bit of a recluse. There's a myriad of reasons, but you have to have a strong will. You have, मतलब इवन सिंगिंग को लेके अगर मैंने उस वक्त सबकी बात सुन ली कि नहीं आप ट्रेनिंग की जरूरत है, ये की जरूरत है, I could have just said, okay, ठीक है, नहीं हो रहा, छोड़ दो, अभी बस एक्टिंग कर लो. एक्टिंग में anyway I was getting good success, but I took it as a challenge. भले वो किसी डायरेक्टली मेरी तरफ नहीं, किसी का नहीं था, but I took it as a challenge कि नहीं, ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं करके दिखाता हूँ. और मैं you have to be very hard working, so you have to always know that भले वो acting हो, singing हो, कुछ भी हो, you have to put the effort, so anybody coming up in this industry, I would definitely recommend to them, अगर आप genuinely अपने आप में believe करते हैं, then you have to have that never give up attitude. But वो never give up attitude के साथ बहुत realistic होना भी जरूरी है. If I would have just jumped into singing at that time, knowing the faults I have, and मैं चलता रहता और मैंने acting को इनकार कर दिया होता, then एक लिमिट तक मैं भी जाता, that would have been it. You have to know कि you have to, I say this to people a lot, और वो समझ नहीं पाते. मैं कहता हूँ अपने आप को जज करना, सही जज करना बहुत जरूरी है. सिर्फ अपने आप को कहना कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, वो नहीं चलता. यू हैव टू नो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है. अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओ और अपनी वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग करो, उनको बेहतर करो. That is something that I think anybody up and coming, whether it be singing or acting or any field, to be honest, but a lot more so हमारी field में वो लागू होता है, because it's very cutthroat. आज आप हो, I know so many actors who were with me at that time, and they're nowhere right now. They've gone back to their homes or whatever it is. So I think longevity रखने के लिए आपको adapt करना पड़ता है. You have to just keep changing with the time, and I've been doing that. Okay, you mentioned about cutthroat competition in the industry, which is a fact. What would be your word of advice to the aspiring actors and singers who wants to enter this industry? Okay, should they have a plan A and plan B also in place, or 100. you just stick to your plan A? You can never stick with just one plan. In my case, at the age of almost 40, I not left, but I stopped doing television and I just jumped into singing. Same way, जब मैं इंडिया आ रहा था, माँ बाप को लगा था कि तू पागल है, तू कहाँ जा रहा है, मतलब अमेरिका में पैदा पला होके यहाँ पे तेरे पास सब सुविधा है, वेल टू डू फैमिली है, और तू ये सब छोड़ के तू वहां पे भीड़ों में, मतलब तू जाके ऑडिशंस में धक्के मारेगा, खाएगा. एंड आई सेड, हाँ मुझे खाने दो, मैं देखता हूँ, थोड़े धक्के खाने जरूरी हैं. सिल्वर स्पून के साथ मैं कब तक ऐसे अपनी जिंदगी बिताऊंगा. तो like you mentioned, the advice I would give to kids is have that as a plan A, and it could be your main plan, but you always have to have something else that you're good at. So finishing your studies is something that's very important. Like मैं भले ही मैं ये काम कर रहा हूँ now, मेरे लिए plan I have a A, B and C मेरे लिए थोड़ा बहुत, because it's like I'm acting, I'm singing, and I also have a business. So वो हमेशा मेरे, मतलब वो बिजनेस बैकग्राउंड से क्यों मैं आता हूँ, तो वो हमेशा मेरे लिए है, बिकॉज आप सर्वाइव कैसे करोगे, स्पेशली बॉम्बे जैसी सिटी में, सॉरी मुंबई जैसी सिटी में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव हियर. इट्स सो एक्सपेंसिव, एंड यू हैव टू हैव अ प्लान बी. आप कब तक अपने माँ बाप से पैसे मांगते रहोगे, एंड या यू हैव टू हैव अ प्लान बी, एंड यू हैव टू रियलाइज कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद, इफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, दैट यू हैव टू बी एबल टू चेंज लेन्स. मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो जो आपकी मंजिल है वो छोड़ दो, लेकिन इट्स लाइक आप एक ही दीवार में बार बार घुसने की कोशिश करो. अगर वो लुक एट सम अदर ऑप्शंस, मे बी वहां से आप फ्रॉम अनदर एंगल यू कैन रीच, मे बी यहाँ से. आपको सच बताऊं, जब मैं पहले इंडिया आया था, मैंने ऑडिशंस बहुत सारे दिए. सब कह रहे थे कि हाय भाई तेरी तो बॉडी बिल्डर वाली बॉडी है, तू कहाँ, मतलब आई वाज मच बिगर देन दिस आल्सो देन व्हेन आई केम फ्रॉम द यूएस. एंड इवन वीजे बनने के लिए चैनल वी से लेके एमटीवी से लेके
I think these are the two main ones. मैंने सबको कॉल किया कि मैं बीजे बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ. No interest from even channel भी, no interest. वहां पे घुसने के लिए, हालांकि मेरी सोच ये नहीं थी कि मैं ऐसे घुसूंगा, but एक डिटोर लिया ना मैंने. I took part in a reality show, and उस reality show में जो मंजिल मुझे शुरुआत में चाहिए थी मुझे मिली. Acting directly अगर मैं बालाजी के पास जाता तो frankly I don't even know how I would do that. But एक चीज के थ्रू मैं गया और वहां से एक दूसरी ओपनिंग मिली तो मैं घुसा वहां पे. वहां से घुसने के बाद फिर मैंने दूसरी ओपनिंग बनाई. So these things are very important. तो आपको you have to be on top of the situation. At the same time, अगर तीनों जगह से एंट्री नहीं हो रही तो भाई फिर आपको सोचना पड़ेगा. फिर वो प्लान बी, प्लान सी होना जरूरी है. Because end of the day, survival of the fittest. But survival अगर आप नहीं करोगे तो fittest होने का कोई मतलब ही नहीं है, because you have to survive. So that's definitely the advice. Go for it, give it your best, but be realistic and also have a plan B कि ये नहीं होता तो मैं करूंगा या मैं कर सकता हूँ. Okay, my last question to you. Please tell us about your upcoming projects. Upcoming projects are, I have a bunch of songs that are going to be releasing. In fact, and I'm doing live shows, as I said. So anybody in Delhi or in Kashipur, although the Delhi event is private, so I don't think you can come in there, but Kashipur, you're more than welcome to come there. And other than that, I have a song that's going to be releasing next month again. This month, previous to this month, I had released a song that I just did when I shot it with Sana Khan of Big Boss fame, called Compliments, Punjabi number. My next song is also a Punjabi number. So I'm getting a little more accustomed to Punjabi, but साथ में I will be doing some Hindi songs as well. So music is very big in my this coming year. I will just be continually doing musical tracks. And I will also be doing something on the digital space as well, like I've mentioned before. So something of that will also be coming soon. And so yes, I will get to do a little bit of both, which I always enjoy. Okay, it was lovely talking to you. It was an absolute pleasure to have you. Thank you. My pleasure. My pleasure. You take care.